Hello everyone, welcome to Elitesgrid. So today we will be discussing a reading comprehension passage which came in CAT 2022 in the first slot. So let's begin reading it. Stories concerning the undead have always been with us. From out of primal darkness of mankind's earliest years, come whispers of eerie creatures not quite alive or alive in a way we can understand, yet not quite dead either. These may have been ancient and primitive deities who dwelt deep in the surrounding forest and in remote places, or simply those deceased who refused to remain in their tombs and who wandered about the countryside. So what we physically tormenting and frightening those who were still alive. तो अभी हमने क्या पढ़ा इन lines में? We are talking about some other creatures, not humans, who are not completely dead, but they're not alive. So who are, usually what we call as atmas, they're dead, but still they're not completely dead. So ऐसी stories, it's always been with us, be it, about certain creatures in this way or about some deities, some goddesses or something. Sometimes they live in forests or remote places, or about some dead people who are still tormenting or frightening the people who are alive. तो ऐसी आत्मा भूत प्रेत वाली स्टोरीज हमारे साथ हमेशा होती थी, यही बात हुई अभी तक. मोस्टली दे वर, बट अर्लियर कैसी होती थी ये बताओ, कि पहले ऐसे कभी फॉरेस्ट के बारे में या रिमोट प्लेसेस के बारे में कुछ ऐसे. मोस्टली दे वर इल डिफाइंड स्ट्रेंज साउंड्स इन द नाइट beyond the comforting glow of the fire, or a shape half glimpsed in the twilight along the edge of an encampment. They were vague and indistinct, but they were always there with the power to terrify and disturb. They had the power to touch the minds of our early ancestors and to fill them with dread. Such fear formed the basis of the earliest tales, although the source and the exact nature of such terrors still remained very vague. तो अगेन उन्हीं मतलब भूत वगैरह की बातें हो रही है कि समटाइम्स बेसिकली अलग अलग वेज जिससे हम उनको एसोसिएट कर पाते हैं वो बताया हुआ है. फॉर लाइक यू कैन फाइंड देम इन फॉरेस्ट और रिमोट प्लेसेस, और समटाइम्स दे कैन बी certain strange sounds or some different lights in the night, or certain other things बहुत vague या indistinct. This way, basically we are talking about them only, कि in which all forms we can find them or we can associate them. And as mankind became more sophisticated, leaving the gloom of their caves and forming themselves into recognizable communities, towns, cities, whole culture, so the undead traveled with them, inhabiting their folklore just as they had in former times. So ये पहले की बातें थी, when we were at early, बिल्कुल अर्ली मैन की एज में, कि कैसे कैसे था, और स्लोली स्लोली जैसे ह्यूमंस दे इवॉल्व एंड आवर सोसाइटीज डेवलप्ड, वी बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड, तो ऐसे ही इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. इवन दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अनडेड ट्रैवल्ड विद देम. दैट मींस जस्ट एज ह्यूमंस कल्चर्स एंड कम्युनिटीज चेंज, दे डेवलप फर्दर, तो ये लोगों में भी चेंजेस आए जैसे हम उन्हें एसोसिएट करते थे. अर्ली टाइम्स में कुछ और वे थी उनको एसोसिएट करने की, अब जब डेवलपमेंट हो गई धीरे धीरे तो कुछ अलग वेज हो गई. दे ट्रैवल्ड विद देम, मतलब वो पीछे नहीं रहे तो उनके साथ ही, बस चेंज हो गए. Now they began to take on more definite shapes. देखो पहले it was vague, they were vague and indistinct, उनकी vague shapes थी, but now more definite shapes. They became walking cadavers, the physical embodiment of former deities and things which had existed alongside man since the creation. Some still remained vague and ill-defined, but as mankind strove to explain the horror which it felt towards them, such creatures emerged more readily into the light. So mainly, they became more and more well defined. पहले वो बहुत vague और ill defined थे, तो अब that definition started becoming better. Of course, not every such kind of creature was well defined. Some of them were still ill defined या vague थे, but many of them started becoming more definite in the explanation. In order to confirm their abnormal status, many of the undead were often accorded attributes which defied the natural order of things: the power to transform themselves into other shapes, the ability to sustain themselves by drinking human blood, and the ability to influence human minds across a distance. Such powers, described as supernatural, only lent an added dimension to the terror that humans felt regarding them. तो ऐसे ही और changes होते रहे.
अब धीरे धीरे we started associating them with certain powers जो different थी. They were abnormal, of course, not just like a natural thing. They could transform themselves into different shapes, या started drinking human blood, या कैसे हमारा mind influence करने लगे. तो अब अलग अलग और तरीके आ गए, उनसे हम कैसे associate करते हैं, उनको कैसे define करते हैं, और अलग अलग ways आ गए. And it was only natural too that the undead should become connected with the practice of magic. तो अब मैजिक से भी वो कनेक्ट होने लग गए. From very early times, shamans and witch doctors had claimed at least some power and control over the spirits of departed ancestors, and this has continued down into more civilized times. तो ये अभी भी चल ही रहा है. These we all have these witch or some magicians या कुछ जो लोग थोड़ा tantrics or something, which claim that they do have control over such spirits. तो ऐसा ही कुछ things started happening. Formerly, the invisible spirits and forces that thronged around men's earliest encampments had spoken through the tribal shamans, but now, as entities in their own right, they were subject to magical control and could be physically summoned by a competent sorcerer. However, the relationship between the magician and the undead creature was often a very tenuous and uncertain one. Some sorcerers might have even become undead entities once they died, but they might also have been susceptible to the powers of other magicians when they did. So abhi bata rahe ki kaise even magic got associated with such undead people. Why we are using undead? क्योंकि वो alive तो है नहीं, पर वो completely dead भी नहीं है. तो एक third stage जो है spirits या ghost, वो सब चीजों की बात हो रही है. So that's why we're calling them undead. So ये बता रहे हैं कि we can have witches or some witch doctors या something जो उनसे directly communicate करते थे, उनको control करने की कोशिश करते थे, but relation is not that certain. तो uncertain तो है इनकी relation, that their relation was quite tenuous and uncertain, not a very stable or certain one. Or how these magicians when they die they might also become, मतलब ये एक अलग थ्योरी है कि हो सकता है ये भी खुद वही वाली undead creatures बन गए हों, whatever. From the Middle Ages and into the Age of Enlightenment, theories of undead continued to grow and develop. Their names became more familiar: werewolf, vampire, ghoul, each one certain to strike fear into the hearts of ordinary humans. So, यही बता रहे हैं, Middle Ages तक to the Age of Enlightenment, which we call Renaissance. तो तब तक कुछ ना कुछ थ्योरीज आती रही. इतनी सारी थ्योरीज तो हमने पढ़ ली कि कैसे पहले अर्ली मैन के टाइम पे कैसे थे, बहुत प्रिमिटिव टाइम में हम उन्हें कैसे एसोसिएट करते थे, किन इंडिकेशंस के साथ उनको एसोसिएट करते थे. जैसे जैसे मैनकाइंड में डेवलपमेंट हुई, सोसाइटीज आई, तब उनमें कैसे चेंजेस आया, उनको हम कैसे नए वे से जानने लग गए, और फिर कैसे और वो भी सब जैसे ह्यूमन सोफिस्टिकेटेड होने लगे, वो अनडेड भी सोफिस्टिकेटेड होने लगे कि शेप बदल सकते हैं, ह्यूमन ब्लड पिएंगे एंड ऑल सच थिंग्स. फिर मैजिक के साथ भी एसोसिएट करने लगे. सो बेसिकली many theories of such people, they came and they developed. बहुत सारी theories आती ही रही, but later on, they became more and more fearful and more familiar. So basically, this was the passage. We are talking about different theories of the undead. So let's come to the question: which one of the following statements best describes what the passage is about? The passage discusses the evolution of theories of the undead from primitive thinking to the age of enlightenment. करेक्ट, यही लास्ट, मतलब एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं कि डिफरेंट थ्योरीज हमने डिस्कस करी है, और एंड में फिर से हम यही कह रहे हैं कि मिडिल एज से एनलाइटमेंट के टाइम तक थ्योरीज आती ही रही. सो ऑप्शन 1 इज क्वाइट अपीलिंग. लेट्स सी द अदर ऑप्शन. द पैसेज डिस्क्राइब्स द फेलियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फुली कॉम्प्रिहेंड देयर एनवायरनमेंट. ऐसे नहीं कहा गया. ऑफ कोर्स ये वी हैव कम अक्रॉस दिस थिंग दैट ह्यूमंस वर ऑलवेज फियरफुल ऑफ देम, दे वर नॉट एबल टू completely know it. But ऐसा नहीं है कि पैसेज की मेन बात यही है कि ह्यूमंस उसको समझ नहीं पा रहे. मेन बात यही है कि कैसे अलग अलग वे में हम उनको एसोसिएट करने लगे. So B is not correct. The writer discusses the transition from primitive thinking to the age of enlightenment. ठीक है, there is a transition. Like transition क्या? Transition means change from this period to this period. A के कंपैरिजन में C इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज A इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट थ्योरीज ऑफ अनडेड कैसे चेंज हुई, थ्योरीज ऑफ अनडेड कैसे इवॉल्व होती रही, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होते रहे. ठीक है, बट सी में वो बात ही मेंशन नहीं है. कोई भी ट्रांजिशन तो कोई भी ट्रांजिशन हो सकता है कि कुछ भी. वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ अनडेड जो मेन चीज थी, बस सिंपल ट्रांजिशन कैन बी ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी ऑफ टेक्नोलॉजी, इट कैन बी ऑफ फैमिली और व्हाटएवर. सो सी इज इनकम्प्लीट, सो वी आर एलिमिनेटिंग इट. डी, the writer describes the ways in which the undead come to be associated with shamans and the practice of magic. Yes, they, the writer does talk about it. एक पैरा में हमने बात भी करी है, but this was not completely about the passage. वो एक थ्योरी है.
तो वो ओवरऑल हम उसको पैसेज की मेन बात नहीं कह सकते, ठीक है, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सो आंसर इज ए ओनली, कि द पैसेज डिस्कसेस अबाउट वेरियस थ्योरीज, वो कैसे इवॉल्व होती रही फ्रॉम प्रिमिटिव थिंकिंग टू द एज ऑफ एनलाइटमेंट एज ह्यूमंस आल्सो गॉट डेवलप. सो ए इज द आंसर. Next, in order to confirm their abnormal status, many of the undead were often accorded attributes which defied the natural order of things. Which one of the following best expresses the claim made in the statement? तो ये जो statement हमने पढ़ी थी कि हाँ, to show that they are abnormal, normal नहीं है humans की तरह, to show that they are abnormal, we accorded them some unnatural things, some features, some attributes which defied, which were against the natural order things, to show that they are normal. अब उनके features normal तो नहीं बता सकते, तो हमने उनके features कुछ ऐसे बताए जो natural order के against थे. They defied the natural order of things. So let's see the statement. कौन इसको best explain कर रहा है? The undead are deified in nature's order by giving them divine attributes. Now see, there is a difference between this word and this. लोगों confusion हो सकते हैं, and you can consider it same. ये है defy. Defy means reject करना, नहीं follow करना, और ये deify which means worship करना God की तरह. बहुत similar देखने में है, but दोनों का meaning अलग अलग है. So just be careful about that. तो ये कह रहा है कि हमने उनको natural चीजों के अगेंस्ट ऐसे क्या, बाय गिविंग देम डिवाइन एट्रीब्यूट्स, नहीं, हमने इनको कोई गॉडेस या गॉड की तरह एट्रीब्यूट्स नहीं दिए. बेसिकली वेयर डिड वी स्टडी दिस? In order to confirm their abnormal status, many of the undead were accorded attributes which defy the, जो बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट थे. हमने उनको ऐसे फीचर्स, ऐसे चीजों के साथ एसोसिएट किया जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी, कि अपनी शेप्स बदल लेना, ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड या एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड, ये सब चीजों से हमने एसोसिएट किया टू शो दैट दे आर एबनॉर्मल. So, when we're talking about A, of course, it was not about giving them some divine features. Divine features तो हमने उनको नहीं दिए थे. So this is wrong. We did not worship them to show that they are abnormal. No, we associated them with very, abnormal features. According the undead and abnormal status is to reject the natural order of things. इस लाइन का मतलब ये नहीं है. इस लाइन का मतलब है हमने उनको बहुत unnatural attributes दिए, characteristics दिए, जिससे वो abnormal लगे. बी कुछ और कह रहा है. बी इज चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द लाइन की हमने अनडेड को एबनॉर्मल स्टेटस दिया, इसका मतलब है वी आर रिजेक्टिंग द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, नॉट रियली दैट थिंग. सी, ह्यूमन बीइंग्स कंसेप्चुअलाइज द अनडेड एज पोजेसिंग एबनॉर्मल फीचर्स. एग्जैक्टली जो बात हमने की थी कि शेप चेंज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड, या फिर इन्फ्लुएंसिंग माइंड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो इस लाइन का इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर एबनॉर्मल स्टेटस मेनी ऑफ द डेड्स वर अकॉर्डेड एट्रीब्यूट्स. ऐसे टू शो दैट दे आर एबनॉर्मल, हमने उनको ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जो नेचर के अगेंस्ट थे, मतलब एबनॉर्मल फीचर्स हमने दिए. सो सी इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन. लेट्स सी डी आल्सो. द नेचुरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनडेड आर रेंडर्ड एबनॉर्मल बाय चेंजिंग देयर स्टेटस. एब्सोल्युटली एब्सर्ड स्टेटमेंट. कुछ भी अपने आप मतलब मीनिंग चेंज करके बोल रहे हैं कि इसका मतलब है अनडेड को के जो नेचुरल फीचर्स थे वो हमने एबनॉर्मल कर दिए बाय चेंजिंग द स्टेटस. This is not the meaning of this line at all. So D is out. Answer is C. कि human beings ने उनको abnormal features के साथ associate किया to show that they are abnormal. C. Third, all of the following statements, if false, could be seen as being in accordance with the passage except. Now read this question very carefully. तो ये जो भी statements हैं, if they are false, then they are according to the passage. मतलब अगर ये statement गलत है तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग है. मतलब अगर ये स्टेटमेंट एज इट इज है, ट्रू है, तब ये पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है ना. तो मतलब गलत है स्टेटमेंट्स. ये जो स्टेटमेंट्स दिए हमें से गलत है एक्सेप्ट, तो मतलब आपको वो स्टेटमेंट निकालनी है जो सही हो, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स तो वो होंगी जो पैसेज के अगेंस्ट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है. तो हमें एक्सेप्शन निकालनी है, मतलब जो पैसेज के साथ है इसकी एक्सेप्शन. अब देखो, इस चीज की, इस रिलेशनशिप की आपको एक्सेप्शन निकालनी है, मतलब which is according to the passage. The undead remained vague and ill-defined even as mankind strove to understand the horror they inspire. No, as mankind strove to understand, वो ज्यादा definite होते गए. यही हमने पढ़ा है कि as mankind developed, they started having more definite shapes, better distinction, better definition. ठीक है, तो definite हो गए, vague नहीं हुए. कुछ vague थे, but overall overall they started becoming well defined, not ill defined. तो ये opposite है, ये गलत है. तो 3 स्टेटमेंट गलत होगी, एक सही होगी, हमें एक वो वाली फाइंड आउट करनी है. सो वो ए तो नहीं है.
The relationship between shamans and the undead were believed to be strong and stable, but no, उन्होंने कहा था it is uncertain and tenuous, वो unstable है, strong नहीं है, it is weak, tenuous and uncertain, strong नहीं है वो. Relationship between magician and undead creatures were often very tenuous and uncertain. तो वो strong और stable तो बिल्कुल भी नहीं है. So this is also out. The growing sophistication of mankind meant that humans stopped believing in dead. Believing in undead, absolutely wrong. वो line है कि when mankind developed या mankind moved to cities, the undead also traveled with him. मतलब उसने छोड़ा नहीं mankind ने, बस form change करते रहे. Undead traveled with him. तो मतलब जैसे जैसे हम mankind की development होती रही, वैसे वैसे इन ghost या spirits क्या मतलब फॉर्मेशन या उनको हम कैसे एसोसिएट करते हैं वो वेज चेंज होने लगे, लेकिन वी डिडंट स्टॉप बिलीविंग इन देम. टिल नाउ वी आर बिलीविंग इन देम. So you've stopped believing in them? Incorrect. D. The transition from Middle Ages to the Age of Enlightenment saw new theories of the undead. Correct. कि बहुत सारी हमने नई नई theories देखी. This was the main thing about the passage only. कि yes, you know, end में from Middle Ages to Enlightenment, there were many theories of undead which came up. So answer is D. Which one of the following observation is a valid conclusion to draw from the statement? Okay, this is the statement. From out of primal darkness of mankind's earliest years come whispers of eerie creatures, not quite alive or alive in a way which we can understand, yet not quite dead either. So, is statement का meaning क्या है? या क्या conclusion, we can observe from it? What it means कि, when we're talking about some early years of mankind, of the early man का जो time था, उसमें कुछ ईरी क्रीचर्स थे, उनके विस्पर्स की बात हो रही है, जो ना तो पूरी तरह अलाइव थे या अलाइव जैसे हम लोग होते हैं, तो ना तो अलाइव थे और ना ही डेड थे. मतलब कोई चीज जो डेड हो गई पर पूरी तरह डेड नहीं है, कुछ भी ऐसे, मतलब ना तो वो पूरे जिंदा है ना ही वो मरे हुए हैं. तो वो कुछ इस तरीके के क्रीचर्स थे. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. Mankind's primal years were marked by creatures alive with eerie whispers but seen only in the darkness. इसका मतलब ये नहीं, अब स्टेटमेंट ये कह रही है कि सिर्फ वो रात को दिखते थे. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रात को दिखते थे या उनकी whispers थी, ये मतलब नहीं है स्टेटमेंट का. ठीक है. B. Mankind's early years were marked by a belief in the existence of eerie creatures that were neither quite alive nor dead. Correct. कि हमारे early years, we had such kind of creatures जो ना तो पूरी तरह alive थे ना पूरी तरह dead थे. Quite correct. यही स्टेटमेंट यही बात कर रही है. बाकी ऑप्शंस देखते हैं. We can understand the lives of eerie creatures in mankind's early years through their whispers in the darkness. Absolutely absurd. कि उनकी whispers सुन के हम understand कर सकते हैं कि what kind of we understand the lives of such people by listening to their whispers at all. ये बिल्कुल गलत है. This is not what this line means. D. Long ago, eerie creatures used to whisper in primal darkness that they were not quite dead. वो whispers में ये बोलते थे कि हम लोग पूरी तरह डेड नहीं है. ये मतलब नहीं है. दिस इज टू मच फनी. तो आंसर इज बी ओनली, बिकॉज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट दे आर नॉट जस्ट रॉन्ग बट दे आर एक्चुअली वेरी फनी. मतलब वो इस हद तक रॉन्ग है कि वो फनी बन गए हैं. सो फ्रॉम आउट ऑफ प्राइमल डार्कनेस ऑफ mankind's earliest come whispers of eerie creatures, they were not quite alive yet not quite dead. So B is capturing the essence of this particular statement in the most appropriate manner. So answer is B. So this passage is over. I hope you would have enjoyed it. Thank you.